Hi everyone, welcome to Learner's Oasis. Today I am going to talk about preeclampsia. Preeclampsia comes under the topic hypertensive disorders of pregnancy. When preeclampsia complicates, it becomes eclampsia. Eclampsia we will see in another video. So welcome to the class again. Hypertensive disorders of pregnancy. This, these are a group of disorders which have hypertension as a main feature. So it includes gestational hypertension, preeclampsia, chronic hypertension, which includes essential hypertension and secondary hypertension, preeclampsia superimposed on chronic hypertension, and eclampsia. So we will see one by one. We will see some of the definitions of terms. First one is gestational hypertension. New hypertension presenting after 20 weeks without significant proteinuria and features of preeclampsia. So, gestational hypertension जो है, it is hypertension during pregnancy. 20 weeks के बाद hypertension हो जाती है इसको gestational hypertension कहते हैं. इसमें proteinuria और other features preeclampsia के other features नहीं होता है. And BP level return to normal within 3 months postpartum. डिलीवरी के बाद postpartum पीरियड में 3 महीने के अंदर इसका हाइपरटेंशन जो है नॉर्मल हो जाती है. इसको कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. दूसरा आ जाती है प्री एक्लाम्पसिया. इट इज न्यू हाइपरटेंशन प्रेजेंटिंग आफ्टर 20 वीक्स विथ सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया. पहले केस में प्रोटीनूरिया नहीं था. यहाँ पे एक ही डिफरेंस है. प्री एक्लाम्पसिया में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो जाती है 20 वीक्स के बाद हाइपरटेंशन हो जाती है. उसके साथ सिग्निफिकेंट प्रोटीनूरिया भी हो जाते हैं. सिग्निफिकेंट मीन्स प्रोटीनूरिया एक स्पेशल जो फीचर बन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बन के इनके साथ हो जाते हैं. तो इसको प्रीएक्लाम्पसिया कहते हैं. दूसरा एक्लाम्पसिया. एक्लाम्पसिया इज ए कन्वल्सिव कंडीशन एसोसिएटेड विद प्रीएक्लाम्पसिया. मैंने पहले कहा था प्रीएक्लाम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन है एक्लाम्पसिया. प्रीएक्लाम्पसिया जब ब्रेन को अफेक्ट कर लेते हैं, वो ब्रेन इरिटेशन की वजह से कन्वर्शन शुरू होने लगता है. जब कन्वर्शन भी आने लगता है प्रीएक्लाम्पसिया में, उसको एक्लाम्पसिया कहता है. ये डिफरेंस है. अदरवाइज ऑल फीचर्स ऑफ प्रीएक्लाम्पसिया प्लस कन्वर्शन ये एक्लाम्पसिया होती है. नेक्स्ट जो कंडीशन है क्रोनिक हाइपरटेंशन. इट इज हाइपरटेंशन दैट इज प्रेजेंट बिफोर 20 वीक्स characterized by a BP of 140 over 90 millimeter of Hg or greater. सो ये हाइपरटेंशन है. प्रेगनेंसी होने के पहले से इसको हाइपरटेंशन था और 140-90 से या उससे ऊपर हाइपरटेंशन रहा, उसको कहते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन. ये सेकेंडरी या प्राइमरी दोनों हो सकता है. प्राइमरी होती है हाइपरटेंशन से शुरू हो जाती है. सेकेंडरी होती है दूसरा कोई डिसीज, सिस्टमिक डिसीज था, जैसे किडनी प्रॉब्लम था या फिर हार्ट प्रॉब्लम था या कोई भी डिसीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है. इसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. नेक्स्ट टर्म है प्रीएक्लाम्पसिया सुपरइम्पोज्ड ऑन hypertension, chronic hypertension. It is hypertension present before 20 weeks with development of symptoms of preeclampsia after 20 weeks. एक्चुअली ये क्या होता है, ऑलरेडी पेशेंट हाइपरटेंसिव था पहले से, प्रेग्नेंट होने के पहले से हाइपरटेंसिव था. उसके 20 वीक्स के बाद जो है उसमें प्रीएक्लाम्पसिया शुरू हो जाते हैं. प्रीएक्लाम्पसिया का सिम्टम्स भी आ जाता है, जैसे प्रोटीनूरिया, एडिमा वगैरह शुरू हो जाता है. तो इसको कहते हैं प्रीएक्लाम्पसिया सुपर इम्पोज्ड ऑन हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन के ऊपर प्रीएक्लाम्पसिया भी आ गया, इसका ये मतलब है. सो दैट इज the condition. So these are some of the definitions related to preeclampsia. Now we'll see the preeclampsia in detail. Definition of preeclampsia. Preeclampsia is a multi-system disorder of unknown etiology characterized by development of hypertension to the extent of 140 over 90 millimeter of Hg or more with proteinuria after the 20th week in a previously non-normotensive and non-proteinuric woman. तो प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है, वो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है. सारे ऑलमोस्ट सारे सिस्टम को ही अफेक्ट कर लेता है प्रीक्लैम्पसिया.
और अननोन एटियोलॉजी, इसका एक्सैक्ट कोर्स किसी को नहीं पता, अननोन एटियोलॉजी है इसका। कैरेक्टरिस्ट बाय, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर इज हाइपरटेंशन 140/90 या इससे ज्यादा हाइपरटेंशन रहती है, प्लस प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया हाइपरटेंशन वगैरह रहता है। ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है विथ अननोन एटियोलॉजी। आफ्टर, ये सब कब होता है? आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ये शुरू हो जाता है। द और ये लेडी को पहले शी वॉज नॉर्मोटेंसी और नॉर्मल प्रोटीन। नॉर्मोटेंसी में हाइपरटेंशन नहीं था, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर था उसका, और प्रोटीनूरिया भी नहीं था, नॉन प्रोटीनोरिक थी वुमन पहले। सो ये है प्री एक्लाम्शिया का डेफिनेशन। some amount of edema is common in normal pregnancy। नॉर्मल प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत एडिमा तो होता ही है, लेकिन ज्यादा जब हो जाता है वो प्रीक्लैम्सिया के साथ एक फीचर बन जाती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन is defined as the hypertension that develops as a direct result of gravid state। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होती है? प्रेगनेंसी या ग्रेविड स्टेट की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या पीआईएच कहते हैं। PIH includes gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, etc. We have seen this before. Diagnostic criteria of preeclampsia। preeclampsia कैसे diagnose कर सकते हैं? हाइपरटेंशन होगा, preeclampsia है, प्रेग्नेंट वुमन को अगर हाइपरटेंशन है, राइज ऑफ BP 140/90, then edema, demonstration of pitting edema over the ankles after 12 hours bed rest। लेडी को जो है एंगल्स में फिटिंग एडिमा हो जाती है शुरू में, उसके बाद वो बाकी बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाती है। लेकिन जो एडिमा है पेशेंट को, हाइपरटेंशन है प्लस उसको प्रोटीनूरिया भी है। प्रोटीनूरिया प्रेजेंस ऑफ टोटल प्रोटीन इन 24 आवर्स यूरिन मोर देन 0.3 ग्राम। प्रोटीनूरिया इसका 24 आवर्स यूरिन में 0.3 ग्राम या 2+ इन यूरिन टेस्ट। क्लीन कैच यूरिन से अगर टेस्ट किया तो उसका प्रोटीन रहेगा 2+। सो इस कंडीशन को, ये सारे कंडीशंस है, तो वो प्रेग्नेंट वुमन में ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है, तो शी इज प्रीएक्लाम्प्टिक। ये क्लिनिकल फीचर्स से डायरेक्टली डायग्नोस कर सकते हैं प्रीएक्लाम्प्टिक। Now you'll see the etiology of preeclampsia। Etiology of preeclampsia is unknown। Actual जो cause है वो unknown है, nobody knows it। कुछ risk factors है जिसको हम consider करते हैं। Risk factors include nulliparity, nullipara woman, and pre-existing chronic hypertension, पहले से hypertension था। vascular disorders, जो blood vessel में problems है, vascular disorders like renal disorder, diabetic vasculopathy, etc. Then pre-existing or gestational diabetes। pre-existing means पहले से डायबिटीज था या जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज हो जाते हैं, इसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। सो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक्लाम्शिया या प्री एक्लाम्शिया होने की। older age group, that is more than 35 years or less than 17 years of maternal age, ये सारे risk factors हैं preeclampsia होने की chances। So we will continue with the risk factors। Family history of preeclampsia, preeclampsia or poor outcome in previous pregnancies, multi-fetal pregnancy, obesity, chronic infections, chronic inflammatory conditions, molar pregnancy, ये सारे conditions जो है preeclampsia के होने की chances देते हैं। The clinical types of preeclampsia, first one is mild and second is severe। Mild cases, that this includes cases of sustained rise of blood pressure of more than 140 by 90 millimeter of mercury but less than 160 millimeter of Hg systolic or 110 millimeter of Hg diastolic without significant proteinuria। So there is a rise in blood pressure from 140 over 90 millimeter of Hg to 160 over 110 millimeter of Hg, not more than that, and without any
significant proteinuria. That is mild case. Then next is severe case. Severe case is presenting the following. The blood pressure more than 160 or 110 millimeter per Hg with proteinuria, oliguria, HALF syndrome, cerebral or visual disturbances, and AUGR. So that is, these are the types, clinical types of preeclampsia, mild and severe. Now, the signs and symptoms of preeclampsia. The mild symptoms of preeclampsia include slight swelling over the ankle, or which persist on rising from the bed in the morning, or tightness of the ring of the on the finger is the early manifestation of edema due to preeclampsia. So माइल्ड सिम्टम्स में ये होता है कि स्लाइट स्वेलिंग होगा एंकल में, जैसे सुबह उठ के नींद से जब उठता है उस टाइम में ज्यादा होता है, जो रिंग है फिंगर्स में वो टाइट हो जाती है एडिमा की वजह से, ये एक सिम्टम है. ग्रेजुअली द स्वेलिंग में एक्सटेंड टू द फेस, abdominal wall, vulva and even the whole body. धीरे धीरे ये जो एडिमा है वो बाकी एरियाज में, बॉडी का बाकी एरियाज में एक्सटेंड हो जाती है, लाइक फेस, abdominal wall, vulva, इवन एडवांस स्टेज में पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है. So this is the pattern of rising edema. Then severe headache, severe pain just below the ribs. Severe headache होगा और जो ribs के नीचे pain होगी. Vomiting, neurologic findings such as papilledema, hyperreflexia वगैरह होगा. Then petechial rashes and bruising could suggest coagulopathy. Petechial rashes होते हैं जो स्किन के नीचे जो जैसे ब्लूइश कलर दिखता है, जैसे दैट इज पेटेकिया एंड ब्रूसिंग, जैसे ब्रूसिंग हो इसी तरह पेटेकियल रैशेस दिखेगा स्किन में. Then right upper quadrant or mild epigastric tenderness develops as a result of hepatomegaly. So upper quadrant में और mild epigastric रीजन में टेंडरनेस दिखता है. सो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है माइल्ड साइंस एंड सिम्टम्स है प्रीएक्लाम्प्सिया की. The alarming symptoms include headache either located over the occipital or frontal region, disturbed sleep, diminished urinary output of less than 400 ml in 24 hours is ominous. That is, urinary output is diminished even less than 400 ml per 24 hours is a serious sign, warning sign. Epigastric pain, acute pain in the epigastric region associated with vomiting. At times, coffee color is due to hemorrhagic gastritis, or due to subscapular hemorrhage in the liver. So, epigastric pain is mainly due to hemorrhage. Eye symptoms like diameter blurring, dimness of vision, or at times complete blindness. So all these are alarming symptoms. They should be hospitalized immediately if these symptoms develop. The complications of preeclampsia. Maternal complications. First, maternal complications include abruptive placenta, DIC, disseminated intravascular coagulation, and HALF syndrome, acute renal failure, eclampsia, liver failure and hemorrhage, stroke, death, long-term cardiovascular morbidity. All these are complications of mother. Now, the neonatal complications include preterm delivery, intrauterine growth retardation, that is IUGR, hypoxic neurological injury, perinatal death, low birth weight baby with long-term morbidity. All these are the complications of the neonate. Then investigations in preeclampsia include CBC, blood grouping, hepatitis B and C. Then urinalysis of clean catch specimen proteinuria 2+ or higher is significant and warrant
further evaluation to rule out preeclampsia. यूनालिसिस में प्रोटीनूरिया 2 प्लस आ रहा है तो उसका आगे इन्वेस्टिगेशन करना है प्रेक्लैम्सिया की 24 hours urine collection with more than 300 milligram of protein, then urea more than 40 millimole per liter or more than 11 milligram per dl, then creatinine more than 1 gram per dilution. Serum uric acid levels usually more than 6.3 milligram per dilution. LFT, AST, ALT more than 50 international unit per liter. Bilirubin more than 25 international unit per liter. Clotting profile, PT, APTT, fibrin, degradation products. All these are the usual investigations done in preeclampsia. Investigations continued: ultrasound, confirmation of normal fetal development by doing fetal biometry, estimated fetal weight, placental localization, Doppler velocimetry. Screening test in the first trimester to detect changes in spiral arteries and is considered abnormal if there is an early diastolic notch or high RI. Now we'll go to the management of preeclampsia. First is preventive aspects. For prevention, we use antihypertensive treatment, anticonvulsant treatment, steroids for lung maturation, fluid balance, mode and timing of birth, fetal monitoring in high-risk patients, intrapartum care, postnatal monitoring, treatment and investigation. These are some of the measures to prevent complications in preeclampsia at different levels. Pre-pregnancy weight control in high-risk patients, vitamin B and folate supplements. These are used in primary prevention, cessation of smoking, control of hypertension in women having chronic hypertension, control of sugar levels in women having diabetes pre-pregnancy. Then secondary prevention, calcium supplements, it reduces parathyroid and renin release, thereby reducing intracellular calcium and smooth muscle contractility. The ideal patient is the one who is obese and with raised BP at booking visit. जिसका बीपी हाई है फर्स्ट विजिट में उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना है then antiplatelet agents low dose aspirin is recommended in high risk patients as it inhibits thromboxane synthesis, helps in proper placentation in a dose of 75 milligram OD starting from 12 weeks until birth. जो patient high risk patient है प्रेक्लाम्सिया डेवलप करने की चांसेस है उसको एंटीप्लेटलेट लो डोज एंटीप्लेटलेट स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि 75 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम 12 weeks. Then for because it prevent the blood clotting. Then for other agents like magnesium and zinc supplements can be given. Fish oil, salt restrictions, antioxidants like vitamin C, vitamin E, etc. can be given as a preventive measure. As the objectives for management of preeclampsia include to stabilize hypertension and to prevent its progress to severe preeclampsia. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है उसको कॉम्प्लिकेट करने से प्रिवेंट करना था कि कॉम्प्लिकेट करके वो severe preeclampsia में न जाए, that is eclampsia develop ना करें. To prevent complications, complication prevent करना एक objective, main objective है. Prevent eclampsia, eclampsia develop नहीं होना चाहिए, preeclampsia complicate करके इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि eclampsia develop हो जाए. Delivery of healthy baby in optimal time. एक healthy baby को right time में delivery कराना objectives है management का. Restoration of the health of the mother in puerperium. We'll continue with the management. The management at home. Ladies should take rest, high protein diet देना उसको. The treatment fail to improve, the patient is to be admitted. अगर इससे patient improve नहीं हो रहा है, उसको condition worst हो रहा है,
तो इसको एडमिट करनी है हॉस्पिटल में। वार्न अगेंस्ट द सिम्टम्स, मदर को वार्न करना, ये सिम्टम्स आ गए तो हॉस्पिटल में आने, जैसे कि हेड एक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस है, वोमिटिंग हो रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, स्कैंडी यूरिन है, ये सारी कंडीशन में इसको शी हैज टू कम टू द हॉस्पिटल। Then hospital management includes taking rest in the hospital also. In taking rest will increase the renal blood flow, that is diuresis effect हो जाती है, increased urine uterine blood flow, uterus में अच्छा blood flow हो जाती है, it improves the placental perfusion, then reduces the blood pressure। टेस्ट रेस्ट लेने से बीपी भी कम हो जाती है। However, complete bed rest is not essential। रेस्ट लेना है लेकिन एकदम से complete bed rest लेने की जरूरत नहीं है। The other management lines include diet, adequate amount of daily protein, about 100 gram per day should be given। Usually salt intake is permitted। Fluids need not be restricted। पेशेंट को 100 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए डेली। सोल्ट इंटेक थोड़ा यूजुअली जितने नॉर्मल सोल्ट इंटेक है वो परमिटेड है, लेकिन फ्लूइड्स भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्लूइड्स लेना पेशेंट को। टोटल कैलोरी एटलीस्ट 1600 कैलोरी पर डे इसको मिलना चाहिए डाइट से। देन डायूरेटिक्स देना पेशेंट को अगर कार्डियक फेलियर है, पल्मोनरी एडिमा है, एंड अलोंग विद सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरेटिक के साथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी पेशेंट को देना है, ये कंडीशंस है तो कार्डियक फेलियर, पल्मोनरी एडिमा वगैरह है तो। देन बहुत ज्यादा एडिमा है, मासिव एडिमा है तो पेशेंट को डायूरेटिक्स देना है। Diuretics, that is furosemide or Lasix is the diuretic, 40 milligram orally after breakfast or 4-5 days a week। वीक में 5 days उसको ओडी देना है, furosemide 40 milligram oral। So these are the management lines of। Now, how to manage the hypertension? Antihypertensive drugs देना patient को, antihypertensive drugs have limited value in controlling blood pressure due to preeclampsia। इसका value limited है लेकिन देना है। Indications of antihypertensive therapy is persistent rise of blood pressure, especially where the diastolic pressure is over 110 millimeter of Hg। The use is more urgent if associated with proteinuria। अगर एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स देने की सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है persistently बढ़ रहे ब्लड प्रेशर more than 110 millimeter of Hg, डायस्टोलिक प्रेशर 110 millimeter of Hg से ज्यादा है और वो persistent है, कंटिन्यू है, तो उसको एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स देना है। अगर पेशेंट को प्रोटीनूरिया भी है तो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है अर्जेंटली देना है पेशेंट को। इन सीवियर प्रीएक्लाम्सिया टू ब्रिंग डाउन द प्रेशर, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। सीवियर प्रीएक्लाम्सिया पेशेंट को एंटीहाइपरटेंसिव देना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो यूजुअली जो एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज होता है वो है मेथिल्डोपा, लेबेटालोल, निफिडिपिन, हाइड्रोलिसिन एक्सेट्रा। नो, जब पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आ गया, बहुत ही सीरियस हो गए पेशेंट, तो उसको हाइपरटेंशन के लिए ड्रग्स देते हैं, लेबेटालोल, हाइड्रोलिसिन, निफिडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। दीस आर द स्पेशल ड्रग्स यूज्ड इन द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। We'll continue with the management। Progress chart बनाना है पेशेंट का। The effect of treatment should be evaluated by maintaining a chart containing, chart में क्या क्या होना चाहिए progress chart में। Number 1, daily clinical evaluation for any symptoms like headache, right upper quadrant, epigastric pain, visual disturbance, oliguria, ये सारे symptoms है तो उसमें chart में mark करना चाहिए। Blood pressure at least 4 times a day, at least 4 times बीपी चेक करनी है और इसको मार्क करनी है प्रोग्रेस चार्ट में। देन स्टेट ऑफ एडिमा एंड डेली वेट रिकॉर्ड। एडिमा का क्या कंडीशन है और डेली वेट लेना है, वेट से पता चलता है कितने एडिमा है, कितने वेट ज्यादा हो रहा है तो एडिमा बढ़ रहा है इसका मतलब। देन फ्लूइड इनटेक एंड यूरिनरी आउटपुट चार्ट बनाना है।
इनटेक आउटपुट चार्ट बनाना है, इसमें फ्लूइड इनटेक कितने, फ्लूइड आउटपुट कितना, ये मार्क होना चाहिए डेली का. Urine examination for protein daily, and if present to estimate its amount in 24 hours urine. यूरिन एग्जामिनेशन प्रोटीन के लिए डेली प्रोटीन एग्जामिनेशन करना है यूरिन में, और कितने यूरिन 24 आवर्स में कितने यूरिन आ रहे हैं ये भी चेक करनी है. ओलिग्यूरिया तो नहीं है, ये स्पेशली चेक करना पड़ेगा. देन ब्लड फॉर हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट काउंट, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लिवर एंजाइम्स, coagulation profile at least once a week. Once a week ये blood test करने हैं patient का. Then ophthalmoscopic examination on admission and to be repeated if necessary. Patient का ophthalmoscopic examination करना है admission में, और repeat करना है अगर symptoms ज़्यादा हो रहे हैं, visual disturbances हो रहे हैं patient को, eye problems अगर बता रहे तो. Then इसके अलावा ये maternal progress chart है, इसके अलावा fetal वेलबीइंग असेसमेंट करने हैं, वो भी मार्क करने हैं प्रोग्रेस चार्ट में. Now, if the pregnancy is beyond 37 completed weeks, delivery is to be considered without delay. 37 weeks तक वेट करने हैं, 37 वीक आ गए तो डिलीवरी कंडक्ट कराने हैं पेशेंट का. उसको इंडक्शन ऑफ लेबर या सिसेरियन सेक्शन, इंडक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकता, सिसेरियन सेक्शन करना पड़ेगा. If less than 37 weeks, treatment may be extended at least up to 34 weeks. अगर patient 37 weeks से कम है उसका जो पीरियड gestation एज 37 वीक से कम है, तो उसको वेट करना है एटलीस्ट 34 वीक तक पहुंचने के लिए, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो. Then careful maternal and fetal well-being are to be monitored during this period. इस पीरियड में जब वेट कर रहे हैं फिर 34 तक पहुंचाने के लिए प्रेगनेंसी को, उस टाइम में प्रॉपर मैटरनल एंड फीटल वेलबीइंग मॉनिटर करने हैं और चार्टिंग करनी है उसके. If persistently increasing BP to severe level, termination of pregnancy irrespective of outcome, duration of gestation. So BP persistently continuously बढ़ते जा रहे हैं और सीवियर लेवल में पेशेंट पहुंच रहे थे, तो कोई वेटिंग नहीं करना 34 वीक्स हुआ या नहीं हुआ, 37 वीक्स भी नहीं हुआ, जो भी कंडीशन में पेशेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, अदरवाइज मदर एंड बेबी दोनों का जो कंडीशन मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी का चांसेस बहुत ज्यादा है. सो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ओनली ऑप्शन इफ देयर इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन बीपी, कंटिन्यूसली बीपी बढ़ रहे तो टर्मिनेशन करनी है. So, now methods of delivery in preeclampsia. First method is induction of labor. इंडक्शन करके पेशेंट को वजाइनल डिलीवरी ट्राई करना चाहिए, और वो फेल हो रहा है तो सिसेरियन सेक्शन करना है. इंडक्शन ऑफ लेबर इंडिकेशन है इंडक्शन करने की लेबर के लिए, वजाइनल लेबर के लिए. aggravation of preeclamptic और newer symptoms such as epigastric pain. पेशेंट को अगर पेशेंट को जो कंडीशन है प्रीएक्लाम्प्टिक कंडीशन है, सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो रहा है पेशेंट को, सो फिर वेट नहीं करना, जितने भी जेस्टेशनल एज है पेशेंट को इंडक्शन करनी है. देन हाइपरटेंशन परसिस्ट इन स्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट लाइंस फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हाइपरटेंशन जो है कम नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ते जा रहा है, तो उसको टर्मिनेशन करनी है लेबर और उसको इंजेक्ट करके डिलीवरी कराने की कोशिश करना है. देन acute fulminating eclampsia, ये कॉम्प्लिकेशन है. acute fulminating preeclampsia अगर पेशेंट को स्टार्ट हो रहा है तो उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी है, लेबर कराना है पेशेंट की. देन टेंडेंसी ऑफ प्रेगनेंसी टू ओवररन द एक्सपेक्टेड डेट अगर से भी ऊपर हो गए तो फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करना ही करना है. कुछ पेशेंट्स का सिसेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, उसके इंडिकेशंस दिया हुआ है यहाँ पे. इंडिकेशंस आर व्हेन एन अर्जेंट टर्मिनेशन इज इंडिकेटेड एंड सर्विक्स इज अनफेवरेबल. पेशेंट का कंडीशन वर्स्ट हो रहा है तो अर्जेंटली उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है, और सर्विक्स जो अनफेवरेबल है वजाइनल डिलीवरी के लिए, तो उसको सिसेरियन सेक्शन के लिए रेफर करनी है पेशेंट को, सिसेरियन तो तुरंत करना पड़ेगा. देन severe preeclampsia with tendency of prolonged induction delivery interval. पेशेंट को इंडक्शन करके काफी देर हो गया, डिलीवरी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और ऐसे केसेस में
जो है सिसेरियन सेक्शन में ले जाना है पेशेंट को. Associated complicating factors such as elderly primary gravidal contracted pelvis malpresentation etc. Patient complicated associated complicating factors है like primary elderly primary gravida है, age से आता है उसका, contracted pelvis है या malpresentation है, ऐसी condition में cesarean section ही करना है. So thank you so much for watching. If you have any doubts, you can clarify it.